A very good morning, class 11th. So here we are now with very important topic from our chapter, that is excretory fluid, or we'll say that is the elimination of the waste products from the excretion by the excretion method, right? So today we are going to talk about that how is urine formed by our kidney, because now we have talked about all the structural things, right? We have talked about in detail about the nephrons. We each and every tubule we have talked about in detail. So today now we are going to start with our process, that is the main process which happens in our kidney, that is urine formation. Now the process of urine formation or process of formation of urine, it is known as uropoiesis. That process is known as uropoiesis, and this uropoiesis or urine formation, it completes in 3 steps, right? It involves 3 processes which are very important. One is the filtration, ultrafiltration, reabsorption, in it is also known as selective reabsorption, and third is our tubular secretion, right? So urine formation, that is always we discuss these urine formation in 3 steps. That is, first is the filtration part, then is the reabsorption, and third one is the secretion. Now first we are going to start with filtration, ultrafiltration, because this filtration happens in glomerulus, so we are calling it as a glomerular filtration. Now let's look at this. As now you are very much familiar with this diagram, so just for our understanding of different terms, we have to draw this diagram again. So here these are our capillaries, and this is afferent arteriole which is coming, this is efferent arteriole which is leaving. Now blood is entering through afferent arteriole, right? Blood is entering through afferent arteriole with a pressure, because the pressure which is exerted by a fluid, it is known as our hydrostatic pressure. So that time, the pressure which is observed during this time, what is the last value we discussed in our yesterday's lecture? Hydrostatic pressure which is observed here, it is high. It is 60 millimeter of mercury, 60 mercury, right? It is denoted by PB. It is the pressure which is exerted by our artery, that is afferent arteriole. So it is, we are going to denote it by the PB. Now then it moves to this capillary bed. Now there is also fluid present in these capillaries, that also puts some pressure, right? So that will put osmotic pressure. So because this capillary bed, it has blood, and this blood has proteins, so there is the osmotic pressure of proteins which are present in the glomerular capillaries. Basically is the albumin start putting up the pressure in this osmotic pressure in the glomerular capillaries. This pressure goes against the hydrostatic pressure, and because this pressure is present in the glomerular capillaries, so this is against, this is the counter force. Basically this is the force which is going against the hydrostatic pressure, and this we are going to denote with PO. So what is PB? That is the hydrostatic pressure of the blood which is coming through afferent arteriole. Now there is already few material, that is already liquid fluid is present here in the capillaries, and that will also put pressure. This pressure will be our osmotic pressure, because it is put up by the proteins. This is against, it shows the counter effect against the hydrostatic pressure. And what is the value of PO? That is 30 of mercury. Now second more pressure there in this corpuscle, renal corpuscle, that is
put up by the liquid, that is by the filtrate, because यहाँ पे हमारा जो blood आया, जो हमारा पूरी body से blood आ रहा है, यहाँ पे वो filter हो रहा है, right? And filtrate, where it is moving to the lumen. So this filtrate will also put some pressure. So this is again hydrostatic pressure which is put up by the liquid. So that pressure is denoted by PC, right? So first pressure we are against, so three pressure which are going against our hydrostatic pressure. One is our by the capillaries, right? Glomerular capillaries, that is 30 mm of mercury. Then there is the filtrate. By the filtrate pressure, filtrate is again a liquid, right? It is the pressure exerted by liquid, so that will be hydrostatic pressure. Now why we are calling it osmotic? Because this is the especially that pressure, much pressure is by the proteins. Now this PC is 10 mm of mercury. Now there is the another pressure, third pressure, which is against our hydrostatic pressure, that is by the interstitial fluid which is present out in the cells. सेल ऐसा नहीं है ना ये खाली जगह पे सारी कैविटी में प्रेजेंट है, नो, पूरा बोमैन कैप्सूल भी ऑल्सो कवरिंग इनसाइड द फ्लूइड, सो वो भी प्रेशर पुट करेगा. दैट प्रेशर इज इंटरस्टिशियल, दैट प्रेशर इज पुट अप बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्यों क्या होता है? जो बेसिकली फ्लूइड इज प्रेजेंट आउटसाइड द cells. So basically यहाँ पे जो हमारा fluid है that will also put hydrostatic pressure, and that value is 10 mm of mercury. It is PI. So again, one more time, please listen to me, that the blood which is coming 60 mm of mercury, the capillary bed, glomerular capillaries, they are putting osmotic pressure, that is 30 mm of mercury. First pressure which is against the hydrostatic. Then is the fluid filtrate which is putting the pressure, that is 10 mm of mercury. Then is the interstitial fluid is putting up pressure, again 10 mm of mercury. Now, so it means there is a complete pressure at the time of filtration, which is during which ultrafiltration is happening, and that pressure is known as glomerular filtration pressure, right? Glomerular filtration pressure. How to calculate its value? PB, that is our hydrostatic pressure which is coming by afferent arteriole, by the blood which is coming through afferent arteriole. PO is the osmotic pressure. PC is our, that is present in the lumen, that is present in the cavity, and PI is the which is present in our interstitial fluid, right? So that is our PB. This PB is our, basically that is the blood which is coming in through the afferent arteriole. Now these three are known as counter pressure, कि इनको जैसे ही blood enter हुआ उसके against में जो pressure जाएगा, basically they are putting pressure against the blood which is coming through afferent arteriole. So that will be, equation will be PB minus PO osmotic plus C, that is your cavity, then is the interstitial fluid. So this will be our 60 minus 50, that amount will be our 10. So what is the glomerular filtration pressure? That is 10 mm of mercury. It means this filtration is happening at the pressure, the glomerular filtration pressure is 10 mm of mercury. This much is clear to us. Now these glomerular capillaries, it means usually in the capillaries which are present in your normal body, in the normal blood which are carrying, glomerular capillaries, they have double pressure as compared to the normal capillaries, because of their, why they are experience so much double pressure? Because there is a lot of diameter difference. Blood जो आ रहा है वो wider tube से आ रहा है, उसके बाद tubes they are getting narrower, so the blood is facing the high pressure is observed here. Now on an average, every single point is a question for NEET. On an average,
1100 to 1200 ml of blood is filtered by kidney per minute. Now please read the lines very very carefully. We are talking about the average value, that is 1100 to 1200 minimum to maximum blood which is coming for the filtration पर बाय किडनी पर मिनट. जो किडनी पर मिनट में ब्लड जितना फिल्टर करती है कितना है वो 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड. इट इज़ 1/5, वी से दैट इट इज़ 1/5 of your blood which is pumped by each ventricle. उसका just 1/5 है ये 1100 to 1200 ml of blood, right? This is very 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 important value for your NEET question, that amount of blood जो हमारी किडनी फिल्टर्ड करती है पर मिनट. इट इज़ नॉट अ डे, इट इज़ पर मिनट में कितना अमाउंट उसके पास पहुंच रहा है, दैट इज़ 1100 to 1200. Now GFR, then what is GFR? It means the amount of filtrate. Filtrate क्या है? Filtrate, it means we are talking about this चाय पत्ती, राइट. मैं आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ चाय पत्ती कि यहाँ से हमारा ब्लड आया, और वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ आर ओ में क्या आता है कि डर्टी वाटर, देयर इज़ नॉट अ क्लीन वाटर विच इज़ कमिंग फ्रॉम योर टैंक, इट इज़ एंटरिंग, राइट. सारा सॉल्ट्स जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए ये आर ओ काम करता है यहाँ पे, और अल्टीमेटली यूरिन बन के वो बाहर निकल जाता है, राइट. सो यहाँ पे भी या तो आप चाय पत्ती का एग्जांपल ले सकते हैं. बेसिकली आप फिल्ट्रेट जो है उसमें से भी हमें एब्जॉर्ब करनी है चीज़ें. ब्लड वेस्ट एक जगह से आया, राइट. सो वेस्ट इज़ कमिंग फ्रॉम वन साइड, देन फिल्टर्ड ब्लड जो ऑलरेडी फिल्टर हो गया वो चला गया इफेरेंट आर्टियल से. यहाँ जो बचा हमारे पास, दैट इज़ आवर, दिस पोर्शन इज़ हैविंग आवर फिल्ट्रेट, चाय पत्ती, जिसमें से भी चीज़ें हमें और एब्जॉर्ब करनी है. हम तो चाय पत्ती तो हम फेंक देते हैं ना, नहीं, यहाँ ये फिल्ट्रेट, ये वाली चाय पत्ती बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज इसमें से हम एक्सेस, इसमें से जो हमारी बॉडी को चाहिए हम ले लेंगे. सो द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी, तो ये फिल्ट्रेट जो प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर पूरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद, जो फिल्ट्रेट हमारी किडनी प्रोड्यूस कर रही है, दैट पर मिनट, दैट इज़ कॉल्ड आवर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बनता है पर मिनट के हिसाब से, दैट इज़ 125 ml पर मिनट. पूरे डे में इट इज़ 180 लीटर्स पर डे. ये दोनों अमाउंट्स की फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि, और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ ऐसा ही आता है. 120 ml पर मिनट लिख देंगे, 120 लीटर पर मिनट, फिर लिख देंगे आपको 180 ml पर मिनट, फिर लिख देंगे आपको 180 लीटर पर मिनट. नाउ लुक, नाउ इफ़ यू आई हैव नॉट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, पक्का गलत करके आएंगे हम एग्ज़ाम में. बट अगर पहली चीज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की डेफिनेशन शुड बी क्लियर, कि वो फिल्ट्रेट का अमाउंट, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय किडनी पर मिनट में जो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ आवर रेट. और ये कितना होता है पर मिनट के हिसाब से? 125. तो अगर GFR पूछा है आपको पर मिनट के हिसाब से, दैट इज़ 125 ml पर मिनट. और अगर उसने इसको लीटर्स में दिया है तो ये मिनट नहीं दिया होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 180 जो अमाउंट है वो पूरे डे का अमाउंट है, 24 आवर्स का अमाउंट है. मिनट का अमाउंट कितना है? 125. अगेन आई एम सेइंग, ये बच्चे बहुत गलत करते हैं. व्हेन यू आर रीडिंग, प्लीज़ डोंट मेक दिस MCQ रॉन्ग. ओके, सो 180 डे का है, लीटर्स, एंड प्लीज़ वैल्यूज़, यूनिट्स पता होने चाहिए हमें. और मिनट कितना है पर मिनट, GFR कितना है? 125. लास्ट में फिर से पूछूंगी क्वेश्चन, डोंट वरी. नाउ कम्स टू योर फिल्ट्रेट, क्योंकि ये जितना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होना था, अब हमारा फिल्ट्रेट विद द फोर्स, प्रॉपर प्रेशर हमारा नीचे आ गया है, हमारी चाय पत्ती यहाँ पे इकट्ठी हो गई है. सो दिस फिल्ट्रेट
इट इज़ नोन एज नाउ नेफ्रिक फिल्ट्रेट। और ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है इसको हम यूरिन कभी नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं प्राइमरी यूरिन, बिकॉज अभी हमारा यूरिन बना नहीं है, क्योंकि इस चाय पत्ती से भी बहुत कुछ एब्जॉर्ब करना है, राइट। सो नेफ्रिक फिल्ट्रेट क्या है? इट इज़ अ प्राइमरी यूरिन एंड इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू आवर ब्लड प्लाज्मा, वेरी मच सिमिलर। आई सेड सिमिलर, आई डिड नॉट यूज़ वर्ड सेम, क्योंकि प्लाज्मा में सेल्स भी होते हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन्स भी होते हैं, बट अगर मैं प्लाज्मा माइनस सेल्स एंड आरबी एंड प्रोटीन्स कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? नेफ्रिक फिल्ट्रेट। इसका मतलब नेफ्रिक फिल्ट्रेट में कोई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कुछ नहीं है, प्रोटीन्स भी नहीं है। सो इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा बट नॉट सेम टू प्लाज्मा, सिमिलर है, राइट। इट मीन्स इट इज़ आइसोटोनिक, बेसिकली सेम है तो आइसोटोनिक होगा डेफिनेटली। सो दिस इज़ आवर प्राइमरी यूरिन। बेसिकली जो हमारा फिल्ट्रेट यहाँ पे चाय पत्ती आई है उसको हमने बोल दिया प्राइमरी यूरिन। दिस प्राइमरी यूरिन, इस टाइम पे इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, पोटाशियम आयंस, सोडियम आयंस, यूरिया, यूरिक एसिड, दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन आवर दिस फिल्ट्रेट। क्लियर? सो नेफ्रिक फिल्ट्रेट क्या है? जो फिल्टर होने के बाद हमारा आ गई है चीज़ अभी हमारा इसमें ल्यूमेन में, दैट इज कॉल्ड योर नेफ्रिक फिल्ट्रेट। नाउ दिस नेफ्रिक फिल्ट्रेट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर मैं इसमें से सेल्स और प्रोटीन्स अलग कर दूं प्लाज्मा में से तो ये मेरा नेफ्रिक फिल्ट्रेट बन जाएगा। सो दैट इज़ वाई वी से दैट इट इज़ आइसोटोनिक, मीन्स सेम कॉन्सेंट्रेशन। Isotonic means same concentration as the plasma has. Amount of plasma or I will say the nephric filtrate per minute entered or passed through all the nephrons of both the kidney is 650 ml. Again listen to me. Amount of nephric filtrate or plasma per minute entered, it passes through all the nephrons of both the kidney. कितना amount of plasma? 650, and this is known as renal plasma flow. इसका मतलब 650 ml पर मिनट ये जो प्लाज्मा है पूरे नेफ्रॉन्स में, बोथ द किडनीज में ट्रेवल करता है फिल्ट्रेशन के लिए, राइट क्योंकि इसी से हमारा रीएब्जॉर्प्शन और यूरिन बनने वाला है। सो कितना है इसका रेट? 650 ml पर मिनट। नाउ GFR का रेट क्या था? दैट इज़ अवर 125 ml पर मिनट। सो इन अ डे 150 to 180, यही हमने बोला था, दैट इज़ इन अ डे कितना लीटर पर डे हमारा प्रोड्यूस हो रहा है? दैट इज़ 150 to 180 liter nephric filtrate is produced by our kidney, and only 1.5 to 1.8 liter is यूरिन इज़ एक्सक्रीटेड। सी यूरिन जो है सभी इंडिविजुअल्स में सेम नहीं होता है, इट वेरी कैसे? बिकॉज ये जो कैलकुलेशन करते हैं हम, इट इज़ 1 ml पर kg पर आर के हिसाब से होती है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। बेसिकली ये जो हमने kg लिखा है 1 ml पर kg पर आर, सो अप्रॉक्सीमेटली एवरेज 1.5 to 1.8 liter urine is excreted. That is our daily urine output in a normal healthy individual. बहुत सारी फिगर्स होगी हैं आपके लिए अभी। रीनल प्लाज्मा फ्लो इज कितना प्लाज्मा पूरे नेफ्रॉन्स में ट्रेवल करता है पर मिनट? 650। हाउ मच इज द फिल्ट्रेशन रेट? 125। पूरे डे में 180 लीटर अ डे। एंड यूरिन कितना हम पास आउट करते हैं ऑन एन एवरेज? 1.5 to 1.8 liter. I am very confident that my students, they will not make this question wrong, right? So this is about our first step, that is called ultrafiltration. In my continuing with this lecture, we are going to discuss other two steps, that is selective